coming back to sir, how we just came to this place. This building was a there was a school which was going on पहले रजौरी में काफी अच्छा चल रहा था वो, but I think COVID में affected the school, could not run and all. So thought कि यार ये बिल्डिंग ऐसे ही है तो लेट्स यूटिलाइज दिस बिल्डिंग इन डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. और एक इतना अच्छा सेटअप वो रह गया कि बिकॉज बीइंग ए स्कूल, ग्राउंड भी है यहाँ पे क्लासरूम्स भी हैं, एंड देन वो लैब वेब के हिसाब से कुछ बिल्डिंग जो बनाया हुआ था. सो इट कन्वर्टेड टू होल लॉट ऑफ ए कैंपस. सो नाउ भी मतलब वो बहुत एक मतलब स्ट्रेटेजिकली बोलो या एक थोड़ा एज मिल गया इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दैट एटमोस्फियर इनसाइड दिस प्लेस. वो जब बच्चा यहाँ पे मतलब सर नाउ यू द पार्टन कि इट इज नॉट लाइक बच्चा आया और इतना क्लास इतने से इतने 9 to 4 और 9 to 5 बैठ के चला गया है. फ्रॉम मॉर्निंग 5:30 वो उठ रहा है, इनफैक्ट उठ के रहा है, वो सो भी नहीं रहा है. एंड फ्रॉम व्हेन ही गेट अप टू डू दिस रूटीन, normal physical exercises to conducting classes, evening sports, and then again किसी के weakness पे तो वो बहुत 24/7 आप एक उसमें आते हो ना, तो it becomes like a family rather than a campus and school. नहीं तो एक if I may just interrupt, see you have this as a residential center, right, जहाँ पे बच्चे आके रहते हैं and say almost about 3 weeks if I'm not wrong. 3 weeks, 21 days. 3 weeks. No, that's a, I would say, kind of an ideal time for a person to modify his behavior, because थोड़ा सा टाइम तो आपको नया लगता है एक चीज को वो करने में, बट यस एक बार आप नई चीजें सीखते हो और उसको फिर प्रैक्टिस करके कंडीशनिंग जो होती है बिहेवियर की, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द यूएसपी ऑफ अ इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चा रह के वहाँ सीख रहा है. So if you can just, of course, we will go through the visuals of the center, तो आपका hostel है, facilities, staying facilities, ground, etc. That we will cover that also. But if you could just run through, एक ideal समझ लो जिसे curriculum किस तरह का होता है सवेरे से शाम तक. You of course you have the assessors. What about the other people who are assisting you? जो उनकी fitness के ऊपर ध्यान देते हैं. Then you have their somebody who's in charge of the catering exclusively, usko dekh raha hai, hygiene and various other things, because these are equally important when we talk about modifying the behavior. एक classroom में teaching एक बात है, और जो उनका 24/7 जो चलता है कार्यक्रम, I think that is what to my mind makes a difference. Otherwise online offline में ज्यादा फर्क नहीं है, unless until you can make a difference. So if you can just go over that curriculum या जो चीज आप ध्यान देते हो ऐसे में बच्चे को groom करने के लिए. Yes. So first I heard this also 21 days in DIPR. कि 21 days required to change individual personality. So I thought कि जो DIPR से इतना दिमाग में बैठ गया कि अगर कोर्स डिजाइन करे 21 डेज का करना है, एटलीस्ट ये पता इतना टाइम लगता है उसको वापस एक किसी चीज में फॉर्म होने के. बिल्कुल. And generally, sir, initial days, like initial 2 or 3 days, we only assess candidate on various aspects. क्योंकि सबसे बड़ा जो एक चैलेंज होता है बच्चे के लिए वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही होता है सबसे पहले. मतलब he is coming from different background, and then his knowledge part. How, because people are not very when you suppose for example like if you TS entry and people have come with lots of huge number of percentile and marks and all. 12th में इतने अच्छे मार्क्स हैं, but you ask a normal question. For example, जो आज लेटेस्ट इतना न्यूज में चल रहा है, they are very clueless about it. So 2-3 days we just only give them different topics, let them prepare normal classes and all, and then assess these candidates. Okay, generally every candidate okay इसमें ये problem है, इसमें है, and एक जनरल एक बेसिक हल्का सा सेग्रीगेशन होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके इतने बच्चों पे ज्यादा काम करना है, इनका जनरल अवेयरनेस खराब है, इनका मे बी दे हैव नॉट been into outdoor kind of a stuff, or maybe these are the guys which lacks initiative or something, or they're good in study and all but find difficult to speak and then sir goes to the normal curriculum. अब इसमें जो मेजर रोल्स एक we can say sir एक हमारे सूबेदार मेजर हैं which stay with us, I mean 24/7 inside the campus, सत्यनारायण यादव, and he's like कि बच्चों को मॉर्निंग में 5:30, in fact they don't get scared from us but they get scared from him, because मॉर्निंग में 5:30 वो साबुन को उठाना
उनका नॉर्मल एक्सरसाइज कराना, चाहे वो पीटी है। एंड ही टारगेट सर, मतलब एक बार को हम फिर भी ऐसे करके बोल जाते हैं बेटा आप तो ध्यान रखने नहीं रखना है। ही कीप नोटिसिंग नॉट ओनली द फिजिकल अपीयरेंस एंड द हेल्थ, बट ही ऑल्सो नोटिस कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या, तो इस बच्चे का आम पार बहुत वीक था, ये नहीं कर पा रहा था। सो उस पे पूरा कंटिन्यूस फोकस ही कीप डूइंग। देन कम्स नॉर्मल रोल ऑफ एन असेसर की, as a before we start actually GTO psych and interview, actually we start with the first thing, at least they should able to speak up, they should Correct. able to define themselves what is required, and then फिर सर वही है normal 9 to कम्युनिकेशन पे 4:30. ज्यादा ध्यान है, Yes, हाँ. communication is the entire day. And हम्म, then we go ahead with the different classes, like stage 1 के लिए अलग है, GTO हम्म, के लिए अलग है, इंटरव्यू का पहले जनरल इंट्रोडक्शंस की भी, हाउ इंटरव्यू शुड हैपन, हम्म, किस तरह के सवाल पूछा सकते हैं, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सेम गोज टू साइक। तो इन 3 वीक्स में सर फर्स्ट वीक इज मोर ऑन टू देन टीचिंग। 2-3 दिन ऑब्जर्व किया, बट देन वी कीप पहला मोर फोकस ऑन टू टीचिंग की, हम्म, टीचिंग प्रैक्टिस। सेकेंड वीक इज जस्ट प्रैक्टिस, मतलब वी कीप फोकसिंग की कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। लाइक अगर जीडी का है नाउ, नो मोर टीचिंग, लेट कैंडिडेट स्पीक मोर, हम्म, लेट ही शुड अटेंड मोर सेशन और वेस्टिंग, एंड देन यू गिव हिम द फीडबैक। एंड थर्ड वीक इज मोर ऑफ अ कैंडिडेट्स own, okay, finally sir, now you can more correlate with this interview officer. Some you ask some candidate को कैसे आपने ये तैयारी कैसे किया, just by mere saying कि उसने ये बताया इसने बताया, no one want to know. You want to know what did you do from on your own and how you take हम्म, your journey on. बाकी थर्ड वीक इज अ कैंडिडेट्स ओन अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज आई थिंक टाइम व्हेन वो मेजर चेंजेस जो शिफ्ट होता है ना, कि अब आई एम ऑन माई ओन। मतलब ऑफ कोर्स दीस एंटायर प्रैक्टिसेस एंड द सुपरविजन, व्हेन यू कीप ओनली टेलिंग ये गलत अभी चल रहा है, दिस इज फर्दर नीड टू इम्प्रूवमेंट इन ऑल, बट ये चलता है। एंड सम टाइम वो माहौल सर ऐसा बन जाता है। आई थिंक अ बिगर रीजन ऑफ सच ए ग्रेट सक्सेस इज द एटमोस्फेयर व्हिच एक्चुअली somehow it becomes here। वो एक कॉम्पिटिटिव भी है, वो एक जानने वाला भी है। लाइक आई हैव सीन कैंडिडेट, यू टेल देम कि आपको ना न्यूज़पेपर बोल बोल के पढ़ना है, एंड सर मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल सर, देयर वाज अ कैंडिडेट, she the one boy he came from लखीमपुर खीरी, एंड ही सेड कि सर हम्म, हमें सिर्फ 3 ही शब्द आते हैं, ही शी एंड इट, इसके अलावा आप हमसे नहीं बोलिए। एंड सर आई मीन दो ही स्टेड फॉर 25 days at that time, हम्म, and there's one more girl that I mean quite weak in the communication. When they left, and it is I mean not the success story of ours but the success story of those candidates, क्योंकि वो माहौल में ऐसे ढल गए सर, within 21 days when they left, I mean at least they will never fail in because of their communication speaking के कारण, या उनका अवेयरनेस इतना हो गया था, क्योंकि पूरा टाइम अब वो टॉपिक न्यूज़पेपर डिस्कशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अ टॉपिक विच इज बीइंग आस्क्ड। सो वो एक कहीं ना कहीं माहौल जो ऐसे क्रिएट हो जाता है ना, दैट ऑलवेज हेल्प them to grow and understand things. Okay, and so how's the, generally, if we talk about catering, etc., खाने पीने का क्या है इंतजाम? So we have, I mean, a huge staff, sir, and the very, I mean, good chef. Because हमारे बच्चे आधे, there are number of people who keep saying, कि, the food is initially actually when we started, the number of struggle coming, because you keep the candidate come from different places and you cannot cater for different tastes. But over a period of a time, it Yes. becomes such a मतलब good way कि now even all assessors, everyone sit together and ईट इन द कैंपस। तो वो एक वो बेचारे शेफ पे भी ना वो एक प्रेशर रहता है यार, कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आई विल बी पॉइंटेड आउट है। Okay. सो बिकॉज़ वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर हियर ओनली, सो सो दैट वे सर इट इज मतलब it stays here, the food is here, and now like we have a huge dining hall and where can it go sit there around, and I mean उसमें भी मतलब while eating people keep practicing when you enter and all, like because they only talk about SSB or maybe different topics. Eat, drink, and breathe SSB only. SSB only. 24/7. Okay. Yes, sir. And then there is a huge ground itself. I mean, now we've extended, like there's a huge volleyball. There are 2 volleyball court into there, and one badminton. So मतलब sports and पूरा time ऐसे चलता है कि it seems like when they leave at 21 days ना, become such a family number of candidates. Just कि sir, I mean this is the best reason I came here, because क्योंकि SSB तो बहुत छोटी चीज है, like the way you learn things and you spend time to make friends and all, वो एक अलग रहता है सर। मतलब we try to give as same as it happens in actual SSBs.
नहीं, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। जहाँ तक एसएसबी का सवाल है, वी ले अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन एडेप्टेबिलिटी, राइट। सर। और आजकल हो क्या रहा है कि फ्रेंड सर्कल बहुत सीमित है, ये इज वेरी वेरी लिमिटेड। And when they come here and they see other people, they intermingle with them. I think that is a big takeaway for all the candidates. I've myself interacted, and of course, I'll request you to through a round of the campus separately. And in the meantime, if you can just tell us any specific, there must be a number of success stories, लेकिन कुछ ऐसी जो तुम्हारे को बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि भाई बच्चा ऐसा आया था, on a scale of 1 to 10 he was perhaps somewhere 4 or 5, and then when he went out he was perhaps 9 10 और जो भी है, and finally जब आया था तब हम सोचते थे कि शायद इसका चांस बहुत मुश्किल है होना, बट सर देन फाइनली ही और शी गॉट रिकमेंडेड। कोई कोई ऐसा एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है विच यू कैन शेयर? सर है एक्चुअली द नंबर ऑफ एग्जांपल्स बट I'll say there was a one candidate, sir. He came from, he was from very, एक हिंदी मीडियम से था, एंड आई एम नॉट सेइंग हिंदी मीडियम में उससे फर्क पड़ता है, बट यू नो एक राजस्थान के लोग कॉर्नर से आया है, एंड हिज एक्सपोजर वाज सो लिमिटेड, सो ही वाज फाइंडिंग सो डिफिकल्ट। आप उसका कभी व्हेन ही यूज्ड टू राइट दो स्टोरी इन साइक एंड को, वो कोई पहला सेंटेंस कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, मतलब यू जस्ट कांट मेक आउट एनीथिंग। इट्स लाइक कि यार कई बार ऐसे होता है ना, यू कीप सेइंग यार ये कहाँ, मतलब सर फंसा दिया अभी इस बच्चे को कैसे, एंड देन बट यू कांट लीव देम। But best part was like, he was listening and continuously working. He just keep doing, and the biggest problem with us was this candidate कि यार बोल तो रहा है लेकिन बोल क्या रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। He said कि सर मैं पहले तो मारवाड़ी से हिंदी में चेंज करता हूँ, हिंदी से then I have to use to English. I think but finally when he not only, I mean जब पहले वो सर स्टेज वन क्लियर हुआ ना, everyone said ये भी स्टेज वन हुआ है सर, कि let's see, and then finally got recommended, and now he's in academy. Oh, मतलब he's excellent. already in NDA sir. So I think his name was Devang sir. So his journey was something कि एक अलग ही लेवल पे वो लेके चलेगा कि यार ये बच्चा भी अगर कर सकता है, एंड इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अस एज वेल, कि मतलब इट इज नॉट जस्ट merely speaking some two lines in English or something, or writing something good. Your personality shape, personality required number of aspects. So ये कैसा था कि when he came to academy इधर कैंपस में, एंड देन ही चेंज फिनोमिनस, मतलब वो इतना चेंज हुआ आज के डेट में, व्हेन इनफैक्ट आई कीप गिविंग दिस एग्जांपल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट कि यार अगर उसने किया है ना तो आपको तो करना ही चाहिए। अदरवाइज तो वैसे सर एक्सपोजर वगैरह तो बहुत सारे हैं। there's one more guy, in fact he just got recommended in air force only for pilot entry. this his father, I mean वो रिक्शा चलाते हैं सर यहाँ पे दिल्ली में, and when he came, and but the best part is तो कि आपको पता है कि बच्चा इतना प्राउड लेता है कि when he came in a rickshaw only. And sometime ऐसे जो चलने लगता है रिक्शा करके, ऐसे कि लेट योर रिक्शा गोज, उन्होंने सर माय फादर विल गो आफ्टर माय एडमिशन विल बी ओवर। ओके। सो जब ये स्टोरी सुनने को मिलती है तो देन आई मीन यू फील कि यस, आई मीन यू आर क्रिएटिंग सम इम्पैक्ट। एब्सोल्युटली। नहीं, जैसे सी द एग्जांपल दैट यू गेव अबाउट दिस मारवाड़ी बॉय, सर सो ये जो बदलाव है, ये केवल तभी संभव है जब आप किसी एक जगह रहते हो लोगों के साथ में। इट्स नॉट ओनली अबाउट द process of the SSB or the testing or the knowledge part. It is सर that environment which helps, which grows on the individual also. तो जैसे जैसे वो इंटरेक्ट करता है बच्चों के साथ में, उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, व्हेन ही यस सर सीज। एंड ऑब्वियसली लाइक बच्चे में ड्राइव तो होना चाहिए, ही मस्ट बी वांटिंग टू इम्प्रूव। इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसे रेजिडेंशियल प्रोग्राम का बहुत फायदा होता है। दिस इज माय यस सर पर्सनल दिस थिंग। आई हैव बीन गाइडिंग a number of students here and there, candidates. But yeah, and I do advise those people कि अच्छा तुम जाके कहीं एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए कहीं पे जाके किसी रेजिडेंशियल ऐसे कोचिंग जगह में जाओ जहाँ पे आपको दूसरे लोग भी मिलें जो भी तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज दैट पीयर ग्रुप जो उसमें आप सीखते हो योर एडेप्टेबिलिटी। बहुत सारे जो टीएस वाले बच्चे हैं
Like, I think they require this kind of an exposure more than anybody else. I mean, that is Yes, sir. my reading. So तो इस तरह का ऐसे माहौल का बड़ा फायदा फर्क पड़ता है. And this is, I think, the difference that your institute is making. Otherwise knowledge तो वही SSB का प्रोसीजर सभी जगह सेम है. लेकिन हाँ, जो बच्चे के जो बिहेवियर में चेंज आता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में चेंज आता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. एंड दैट वी नो दैट कि एनवायरनमेंट मेक्स ऑल द डिफरेंस. और उसको डिफरेंस को लाने में बदलाव लाने के लिए 2-3 हफ्ते का टाइम चाहिए ही चाहिए. सो आई थिंक दैट इज वंडरफुल background to you are setting up this institute. And how old is this institute of yours? So yet to complete 1 year. It's not even completely 1 year Oh, once we started this SSB club. So I okay. think it's completing 1 year in October. 1 year in October. So that Yes. is remarkable. And have been following. तो काफी recommendations काफी हुई हैं. कितने recommendations हो गई होंगी अभी तक? I just remember, discussing Yeah. last 3 to 4 and last 4 months, we have come almost 62 or 64 recommendation in the last 4 months itself. Last 4 months. That is मतलब जो NDA Yes. वाला cycle समझ लो आप. NDA and TS. That's it. Of course, yeah. TS follows that. Yes, sir. So that's phenomenal. I'm sure you all will do still better. अभी तो Sir. लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है कि भाई ऐसा भी कुछ है, Sir. LWS SSB Academy. So I'm sure in times to come you will have difficulty in coping up with the strength. That is Sir. my feeling. But I know excellent, I would say, service that you all are giving. And so I let me wish you and the whole team the very best. It's been Thank you, sir. wonderful, Thank you. wonderful talking to you. And मेरे को पूरा विश्वास है कि जो लोग इसको सुनेंगे, जो एस्पिरेंट्स हैं, they will definitely think about it कि भाई हाँ, एक अगर हमें कुछ इस तरह के गाइडेंस चाहिए तो this is one of the possible options. Sir. I'll not like to say this is the only option, but yes, one of Yes. the possible options which is Possible. producing results. So thank you very much, Commander Vikas. It's been Thank you, sir. Thank you very much, excellent sir. talking to you. So Right, thank sir. you Jai Hind, and sir. Jai Hind. Jai Hind.